Okay, our next topic is causes of poverty. हमारे देश में गरीबी के क्या कारण हैं? Alright, number 1, high population. Okay, as all of us know that India stands in the rank of second when we calculate or when we see the world or when we see the countries of the world in the line or in the list of high populated countries. So number 1 is China, and then the highest population nation, the second is India. Obviously अगर हमारे पास इतने सारे लोग हैं, पॉपुलेशन इज हाई, तो हमारे पास खाने पीने और रहने, सैनिटेशन, हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशन, ये सभी का सप्लाई कम है. ऑलराइट, एंड देयरफॉर वन ऑफ द रीजंस इज दैट हाई पॉपुलेशन इज वन ऑफ द रीजंस टू बी पुअर और द पीपल रिमेन पुअर. ऑलराइट, ओके, नाउ सेकेंड वन, we have unemployment. Yes, we are the second largest populated country people, and in that India's government is unable to generate sufficient amount of employment. People are not able to get the government job. In spite of that, we also are unable to fit in the private business. Okay, we are unable to be the self-employed persons. Why? Because our population is so high. Okay, therefore there are so many people who are unable to be educated and therefore unable to be employed. Okay, so many people, therefore they are unable to get the works because already the business or the enterprises are fulfilled. Okay, so people are simply jobless or they are unable to get the work or start a business. Okay, resources are limited as all of us know, and the population is high. So obviously we will have the population which is jobless, the problem of unemployment, and that causes to be poor. All right, next one, inequality in wealth and income. हमारे देश के कई लोग अमीर हैं, कई लोग गरीब हैं, कई लोग लैंड रिफॉर्म के बाद भी अपनी ज़मीन को डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाए हैं और ज़मीन मिला नहीं है. हमारे देश का जो गवर्नमेंट पॉलिसी है वो इनइफेक्टिव रहा है कई एरियाज़ में. तो ये आम बात हो गया है कि कई लोग अमीर हैं, कई लोग गरीब हैं. Alright, some people are able to benefit from the government policies and some people are left out. Okay, some people are educated, some people are uneducated, some people have the resources, some people do not have the resources. All these are the reasons to be unequal in income and wealth. You can see in your village setup, you can see in your hometown, some people are rich, some people are poor. There are various reasons for it. Okay, but the fact is कुछ लोग अमीर हैं, कुछ लोग गरीब हैं. Okay, और जो गरीब है वो गरीब बनता ही जा रहा है और जो अमीर है वो अमीर होता ही जा रहा है. Okay, so this is one of the reasons that we are living in a condition where people are poor. Okay, in that you can immediately point out that corruption is one of the reasons. Okay, to make the nation poor and to make the nation rich. Okay, I mean some people are rich because of corruption, some people are poor, very poor because of corruption. Okay, yes, let us move. Next point, indebtedness. Okay, sometimes it happens. Indebtedness means ऋण लेना, पैसा लेना, उधार लेना. ओके, कुछ समय ऐसे होते हैं जब इंसान मजबूरी में पड़ जाता है और वो अपनी फैमिली को पालने के लिए लोन ले लेता है. एंड ड्यू टू सम रीजंस, मे बी नेचुरल कैलामिटीज, मे बी अनसर्टन इवेंट्स,
ड्यू टू दोज द पर्सन इज अनएबल टू रीपे, वो अपना लोन वापस नहीं कर पा रहा है। और अगर कोई आदमी लोन से दबा हुआ है, लोन के बोझ से दबा हुआ है, तो डेफिनेटली ही इज नॉट अ रिच पर्सन। ओके, तो लोन किसी से आप ले गए हो और आप नहीं चुका पा रहे हो, तो यू आर अंडर द कैटेगरी ऑफ पुअर पर्सन। और वो लोन, उसका इंटरेस्ट देते देते वो इंसान और भी गरीब हो जाता है, और जिससे वो अपना बेसिक नीड भी फुलफिल करने में असमर्थ रहता है। इट इज द पीरियड ऑफ हाई डिप्रेशन and living an unhappy life. Okay, so these persons who are under this indebtedness are poor people. Okay, yes, they do not get the facilities around. Why? Because they do not have money. Okay, they are under indebtedness. All right, let us see the next one. Lack of infrastructure. What is the meaning of infrastructure? In infrastructure, school building, road facilities, health facilities, our warehousings, okay, market area, all these are the infrastructure facilities facilities to develop our economy. Okay, if we talk about agriculture sector, we have to build dams, we have to build canals, we have to provide the irrigation facilities and so on. They are under they come under infrastructure. और ये सभी facilities हमारे आसपास 100% नहीं है, कुछ हैं, yes we have, but we have very less. The infrastructure is insufficient and that cause the persons to be poor. जो लोग infrastructures के नज़दीक हैं वो उसका benefit पाते हैं और they are going to become rich and richer and richer. Okay, and the persons who are in the place where we do not have infrastructure, they become poorer and poorer and poorer. वो लोग गरीब से गरीब होते जाते हैं या वहीं रहते हैं, और अमीर लोग अमीर से अमीर होते जाते हैं या फिर वहीं रहते हैं अमीर. Okay, they are rich. So infrastructure is one of the reasons to cause poverty in India. All right, now next one. We have colonial exploitation. Colonial, what is the meaning of colonial? Colonial, okay. Colonial power, you might have studied somewhere in class 10th. Okay, colonial power is to be understood as the foreigners, और विदेश के लोग जो है किसी दूसरे देश में जाकर के राज करते हैं, शासन करते हैं, known as colonial powers. Okay, suppose if we take the example of India, the Britishers, okay, the British government will be termed as colonial power for India. Okay, so विदेश के लोग हमारे देश में आए और राज किए, वही हमारे colonial powers हैं. Okay, now in India set up colonial power which ruled India for so many years, around 200 years, and that is British government. और वो है ना, वो हमारा colonial power है. यहाँ दूसरा वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड इज एक्सप्लॉयटेशन, शोषण करना. ओके, रिसोर्सेस को यहाँ से उठा करके ले जाना. हमारे देश के जितने भी एनर्जीज हैं, जितने भी गुड्स हैं, रिसोर्सेस हैं, सबको वो लोग उठा करके ले गए. ओके, जिससे हमारे देश के जो लोग हैं उनके लिए रिसोर्सेस में कमी पाई गई. उनके खाने पीने या फिर यहाँ की जितने भी दूसरे रिसोर्सेस हैं, कल्टीवेशन प्रक्रिया है, कल्टीवेशन प्रोसेस हैं, उन सभी को अपने शासन में, अपने अंडर में रख करके यहाँ की जो परिस्थिति है उसको बिगाड़ना. ओके, दैट बिगाड़ना इज एक्सप्लॉयटेशन, शोषण करना. So here we can say that colonial exploitation simply means Britain came to India and it exploited us by taking the resources from India to their own nation, or consuming India's wealth, consuming India's resources and using it for themselves, not for Indians, and that made India to remain a developing nation or to be poor even today. All right,
So these are some of the reasons, these are the causes of poverty in India even today. All right.